जावा रोशनी ये वाला? हाँ मेरा दोस्त क्यों खराब किया? জল 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 খাবে? হ্যাঁ জল সুবিধাদিকে বলো পরে সুবিধাদি জল দাও জল বলে
Roshni, put your bottle. Suspend a date, darling. In 9. 9. Dot. 2. Dot. 15. Very good. Read and match. The duck is in the pond. So we will match. The duck is in the pond with this. Hello, match. The duck is in the pond. हाँ, water. The duck is in the pond. Pond में हम blue color करेंगे. करो. Very nice. बस ये रह गया इसको फिनिश कर. Are you ready to go? चलो पीछे से लाइन में लगो. जाओ. Getting admission in a regular school was a struggle, a real struggle that went on for 3 years. I went to so many schools in the city. For some, Roshni was not prepared for a school setup. For others, she was just too old. In fact, at one point of time, I got so discouraged by these responses that I simply stopped trying. But I knew that Roshni has to go into a regular school. So I started applying again. Finally, things fell into place, and this year, we got admission in a regular school. Roshni showed a spark beyond her age. She started talking very early, she started walking very early, she started repeating nursery rhymes after us, she would sing. People would look at her and they would say, "Oh my, what a beauty with brains." And I used to be secretly very proud of it. But at the same time, there were those red flags, the aloofness, the repetition, the inability to play appropriately with the toys, and her complete indifference to her twin sister. Slowly, other things also started becoming noticeable. She stopped asking questions, she stopped responding to her name, she stopped responding to instructions, she started walking on her toes, she started repeating her speech.
these differences would not let me rest. I got in touch with a friend of mine who has twin boys, and one of them is with the same disorder. I remembered seeing the same things that I had noticed in Roshni, in the child. I called up my friend and I asked her, "What does your son have?" She said, "He has autism." I asked her, "What does it mean? What does having autism mean?" She said, "Well, my son has communication difficulties. My son has behavioral issues. My son has stranger anxiety. My son has speech issues." Many of those things rang a bell. And then I started reading about autism. I read my child rearing books. I read a little on the internet. The more I read, the more I was convinced that Roshni had autism. It did not take me a developmental pediatrician or a psychologist to tell me that Roshni has autism. I went to my pediatrician and I told him, "I think Roshni has autism." Up! जाओ सभी बच्चे जंपिंग करेंगे अपनी जगह पे जंपिंग जंपिंग जापान जंपिंग जापान जंपिंग जापान जंप जंपिंग जापान जंपिंग जापान जंपिंग जापान जंप 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 जंपिंग 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 जंप 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 जंपिंग जंपिंग जापान जंप जंपिंग जापान जंपिंग जापान जंपिंग जापान जंप रोशनी मुझसे 1 मिनट बड़ी है। बचपन में रोशनी मुझे तित्ती बुलाती थी और सोते समय वो कभी कभी मेरी बाल भी खींचती थी। गर्मियों के मौसम में हम लोग बाथरूम में नहाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम लोग बाहर अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्प्लैश पूल में नहाते थे। कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि उसे ऑटिज्म है, उन्हें लगता है कि वो शाय रहती है, तो मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि उसे ऑटिज्म है। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता ऑटिज्म क्या है, फिर मैं रोशनी को की पूरी कहानी उन्हें बताती हूँ, रोशनी को उससे मिलवाती हूँ। ये सब जानकारी मेरे दोस्तों को मैं रोशनी के बारे में देती हूँ। না ওটা থ্রো করো তো ওখানে ওর ভেতরে নো বাস্কেটে রশনি ইউ হ্যাভ টু থ্রো উইদিন ইন দ্য বাস্কেট দূর বেটা এখানে দাঁড়িয়ে থ্রো কর ওকে গুড ট্রাই এবার সৃষ্টি ওটা না বাবা ওটা ভেঙে দেবে দপ বেটা হাত বেকা গোবিন্দ নিয়ে এসো I can recollect it was a bolt from the blue. I mean, there was a feeling of complete disbelief, and once it sets in, once you realize this is it, I mean, it is always happening to someone else, never to you. So then it was, there was a phase during which you are only asking, why did it have to happen to us? Why did it have to happen to me? I have a complete feeling of helplessness. You don't even know what you are thinking about. You're almost as if we were in a zombie mode. So that's it. And the realization that there is no treatment, there is no prognosis, everyone says that she cannot come out of it. So that complete feeling of helplessness. For some time you just don't want to accept it, that this is happening to you, and there's a sense of that there's something must be wrong, maybe the diagnosis is wrong, how can it be? And when you read in the internet you see that okay, the child, an autistic child, does not recognize who is her parents, etc. And here is Roshni calling you Baba.
right, and being affectionate. So there was, for a period of time, I used to think that no, the diagnosis is wrong. But it slowly becomes easier as you start accepting it. Wow, very nice. I think Nirja came to terms with it faster, and she got into the action mode much faster than I did. She dealt with it better. For me, it took a little time. For some time, I just couldn't believe that this is true. कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा बच्चा। रोशनी इसमें। Yes. Square. Square इसमें रोशनी। Your circle. रोशनी चलो circle लेके। आओ circle लेके। चलो circle लेके। चलो circle लेके। चलो let's go. चलो रोशनी सर्कल डालेंगे. बैठो. ये सर्कल डालो. On one hand, I was talking to people, I was gathering knowledge, I was reading books, I was sending emails, I was trying to find out the best treatment option for autism for my child. And on the other hand, I was going through this intense emotional turmoil. I did not want the world to know. I did not want the world to share my grief. All I wanted to do was just to be left alone, work hard on my kid, and somewhere I had this false belief that I'll work really hard with my child, I'll make her come out of this darkness of autism, and nobody will even know that she ever had a disorder like this. But the more I read, the more I realized that we are in it for a long haul. This is not something which is going to go away in a year or even in 5 years. And I also realized that none of it, her behavioral difficulties, her cognition difficulties, are actually her fault. She didn't ask for autism. Slowly, when this realization came, all the depression, all the shame, all the defensiveness at Roshni's inappropriate, so-called inappropriate behaviors, at her difficulty with language, at her difficulty with social situations, everything just vanished. And I realized that I truly enjoyed working with my child. I truly enjoyed teaching my child. And I discovered that I have to become my child's friend, teacher, and mentor. So at the end of it, I was fairly and squarely in my daughter's corner. He can run. Shine in the hut softly. Pin in the bin. A pet dog. A red van. Jump. No. Chalo, turn. Red, orange.
रोशनी? मैम क्या दे रही है? राजमा। राजमा। राजमा खाएगी रोशनी? But don't spoil your uniform, okay? On the rice. हाँ मैम। खाओ दीदी, फिनिश करना है ना? राजमा एंड राइस। राइस भी खाएंगे ना, है ना? भैया इसका थैंक यू मैम। वेलकम। You want a little bit more? जाओ जाओ फ्रेंड्स के साथ खेलो। जाओ समृद्धि एंड वैष्णवी के साथ खेलो जाओ। ये मामा ने फ्रेंड्स। नो रोशनी नो, डोंट। लग गया वैष्णवी को? हाँ? रोशनी नो, कम टू मम्मा। से सॉरी टू वैष्णवी। सॉरी वैष्णवी। ऐसे हर्ट नहीं करते, चोट लग जाती है ना फ्रेंड्स सॉरी को। वैष्णवी। रोशनी। इसमें मैं और मेरी बहन प्ले एरिया में खेल रहे हैं। हम लोग एक मैट्रेस पर खड़े हुए हैं। मैं अपने डॉल के साथ खेल रही हूँ और मेरी बहन इधर उधर देखती है। पेपर कहाँ गया? हाँ, पेपर गिर गया। वाह, सृष्टि कितना अच्छा खेल रही है बेटू। मैं रोशनी के साथ पकड़म पकड़ाई, कैच एंड कैच खेलती हूँ, पर कभी कभी वो खेलते खेलते भाग जाती है। मुझे लगता है रोशनी स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बैट, कैट, 3 लेटर्स वाले शब्द पढ़ना सीख रही है और दूसरों के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना सीख रही है। Piba is very yummy. रोशनी अच्छा ट्रिक रखा है ना उसने? हाँ गुड। पृथ्वी का थंब पकड़ के रखना। Burger is very yummy. ये वाला हाथ है। यार कोई नहीं चल सकेगा। सब जाओ पीछे। वरना हम नहीं खिलाने के। रोशनी आपकी बारी, आप सही बैठ। क्या हुआ? गुस्सा नहीं रोशनी। बाबा करो, बैठो। जाओ, बैठ जाओ। अब
There are times when children want to really play with Roshni, they become over enthusiastic, they become boisterous, and Roshni completely gets overwhelmed by the loud noise, by the proximity, and she retreats into her own shell. Sometimes she lashes out, and then I have to make her understand that Roshni, it's okay, they're just trying to play, they're just being friends. But yes, social skills, play, and peer interaction continues to be an area of deficit for Roshni. जो भी मैं कहता हूँ वही खेल लेती है मेरे साथ आराम से। रोशनी अच्छे से मेरे साथ खेलती है क्योंकि मैं उसका फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ मैं उसका। Okay, don't go that. Okay. मम्मा बात। पृथ्वी धीरे सापिक धीरे करो थोड़ा सा बेटा। रोशनी sit sit रोशनी sit stop रोशनी बैठो हाँ धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे नहीं करेगी। धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे। वो उतर रही है वैष्णवी। मैं With Roshni, most of the time we try to play with ball or physical. Physical games is something that she is very good. She really enjoys. So make her jump on the trampoline or jump on the sofa. Then we try to make her play basketball. Sometimes maybe make her play cricket. So her attention keeps on deviating because her attention span is very small. So you have to kind of keep on pulling her back into the game. Chandula, 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 chandula. Chandula kullu tu. Chandula kullu tu. सृष्टि इधर आ जाओ बेटा। उठाओ पाँव उठाओ। Don't hit mama. Rashi, don't hit mama. पाँव उठाओ अपना। मम्मा के बाल मत खींचो रोशनी, छोड़ो। Jack. Do this. Do this. Defective man, right? Defective man. 6 street. And try it. Hello, be on dance. You had to what? Hey. I can't find you. Give me pink.
देखो इधर, ये क्या कर रही है? चाय पे बैठी है, वेरी गुड। ये क्या कर रही है? गाना गा रहा है, ओके, और ये क्या कर रही है? कर रहा है? पेप्सी पी रहा है, नहीं, और ये क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है, ओके, ये क्या कर रही है? सॉक पहन रहा है। चाय बनाओ। कर लेंगे, गैस ऑन करेंगे। पानी। पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, और क्या डालेंगे? चाय पत्ती, क्या करेंगे? वेट करेंगे, वेट करो। वेट कर, बॉईल हो गया। क्या डालेंगे? दूध डालो। क्या करेंगे अभी? वेट करेंगे, वेट करो। चाय बॉईल हो गई है। चाय बॉईल हो गई, कप लेंगे, कप लेंगे, गैस स्टॉप ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे, चाय निकालेंगे। चाय निकालेंगे। चाय किसको दोगी? तुमको तो मैं, चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। रोशनी, चाय बनाएंगे एक बार और। चाय बनाओ। पैन लेंगे, पानी। Roshni made huge strides with ABA. But that was not enough because that was still a very controlled and a very structured setup. Whatever skills that she had learned in a controlled environment, in a structured environment, she has to practice them in a day-to-day environment. If in her ABA, in a controlled environment, Roshni has been taught to walk in a line or to sit in a class for 30 minutes, what use is that skill if she can't practice it in the real life? क्या चलो लगाओ। अरे देखो, आप बनाओ। Special education and therapy has helped Roshni in many ways. But there are still areas in which we struggle. One is social interactions and the other is play. And I'm just hoping that the more time she spends in school, the more she plays with her classmates, slowly she will overcome these two deficits. पुल करो। हो गई पुल। Roshni finds it hard to interact with children. She can't understand what they're saying, the rules that they are following in their games, plus there are always her sensory needs. She finds flicking her fingers in front of her eyes, touching surfaces, playing with her saliva so satisfying that she'd rather do that than play with the children. रोशनी, आप किसके साथ कर रहे हो? रॉका? किसके साथ कर रहे हो? नुसाइबा के साथ। डागर पाल चल ओरी जीवन शहद जब पगनग से बिंदी से भगत से भालू से
डाल दो हैंड्स क्वाइट करके फिर देख सकते हैं, नहीं तो लाइट ऑफ कर देंगे। हो गया? नहीं काटी हैंड्स हैंड्स बिल्कुल क्वाइट रखना। बबल कैसे नाई नाई कर रही है? बबल कैसे नाई नाई करी? बिल्कुल नीचे से ऊपर जा रही है। ऐसे नाई नाई कर देखो बताओ, मुझे भी नहीं पता कैसे नाई नाई कर रही है। ऐसे फिर नहीं ऑफ करो। नहीं करूँ बबल से देखेगी। क्या करना है? मसाजर लेना है। मसाजर लेना है तो फिंगर्स पे अगर लोगी तो आईज क्लोज करके लोगी। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा पैर भी। नो प्रेशर। Hi sir. बाय। Bye sir. Roshni, school finish. Now we will go Home. home. Yes. Both of us are slowly settling down to the school routine. Some skills, like following group instructions, have come really easily to Roshni, and some activities, like copying from the board, she's yet to learn. Everything that she has to try in school is new to her, but she always tries to do it in the best possible manner. मैकी बैकी कहानी डार्लिंग, खत्म करो इसको, लेके नहीं बैठना। आप दोई भी खाते रहो रोशनी, मिष्टी दोई भी खाते जाओ साथ साथ में। मिष्टी दोई की दाल आपको इतना चॉकलेट क्यों पसंद है? वो मीठी है। क्योंकि ये मीठी है। पर ये बोरिंग है। बोरिंग? उसको बोरिंग नहीं लगता ना? रोशनी को हेल्दी फूड इंटरेस्टिंग लगता है। शी हैज अ वेरी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हाँ, ये भी खाती
खाती है, ड्राई फ्रूट्स खाती है, फ्रूट्स खाती है, नींबू खाती है, कीवी खाती है, और क्या हेल्दी खाती है? चीकू। चीकू तो उसका फेवरेट है। करेला फेवरेट है उसका। हाँ, यस। करेला उठा उठा कर खाती है। रोशनी, कम बैक। कम बैक। फिनिश करो फिर उठेंगे। बस ले जाएगी किसके पास? अरुण सर के पास। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, फिर घर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, फिर घर जाएंगे। हाँ, कुछ कर। Sometimes I feel bad when Roshni has to give up on playtime because we have to go for therapy sessions. But I also know that if we don't put in that extra effort, her progress is going to stop. She will not be able to keep up with the school curriculum. Therapy is also going to teach her some very important life skills. These will come really handy when she has to be independent and survive on her own. बॉर्डर में कलरिंग। बॉर्डर में कलरिंग, और जितना करा रहे हैं उस टाइम बिल्कुल बॉर्डर की कलरिंग बोलते रहना है। चलो देखो, कलरिंग कर रहे हैं, बॉर्डर में कलरिंग, सिर्फ बॉर्डर में करेंगे। ओके, बॉर्डर में कलरिंग करेंगे। हाँ देखो, चेंज करो, कर बेटा, कर। यस, अब चेंज करो, करो। कहाँ जाना है देखो, इधर ऐसे। अब चेंज करो। कहाँ कर रहे हो आप? देखो बॉर्डर में करो। गुस्सा नहीं करना रोशनी, गुस्सा नहीं करना। रोशनी इज गुड गर्ल। आराम से काम। देखो गुस्सा कर रहे हो आप, गुस्सा नहीं करना, आराम से काम करो। गुड, पकड़ के करो। जहाँ थोड़ा सा इसको लगता है ना कि लोड पड़ रहा है, वहीं गुस्सा आ जाता है। वैसे काफी तो गुस्सा कम हो गया उससे। कम तो ऐसा। एक समय था कि गुस्सा, अरे बाबा, बाल फुटना। तय करने के बाद इसमें प्लीज नो, आराम से बैठना है बेटा, आराम से बैठना है। गुड गर्ल हो, आराम से बैठना है। एक तो ये हो गया। अब तो लगता है कि अब ये पढ़ लिख जाएगी, पढ़ने लिखना लायक हो गई है बिल्कुल। अब बस बहुत स्ट्रगल किया सर हम लोगों ने, आपने करो, और इसने तो खैर किया ही है सर। एक्चुअल तो इसी ने किया, रिजल्ट तो इसने देना है ना। इसी ने दिया। रोशनी कहाँ है? टेबल के नीचे। हैं? आगे शी इज इमर्ज्ड। रोशनी आ जाओ, सृष्टि आप भी बैठ। उसके पैर आजा तू भी आजा। वालों बनाती है मुझे। वो लिखेंगे पहले फर्स्ट, यहाँ पे यू राइट 1 2 12। सृष्टि यू राइट माइंड। थर्टीन 14। Srishti, The school session is about to end, and I have been really worried. I don't know whether she's going to make it to the next class or not. Roshni, write 14. I have no idea what the school's expectations are, and it's really important for Roshni to move on.
because she has to be with children who are closer to her in age. So let's just hope that she makes it. 12, 1 to 12. Roshni can recognize and write all the letters now, and she is able to read and write 3-letter words on her own. Okay. She has now understood the number concept. Number concepts are also clear. Clear. Okay. She is able to wear her apron, eat on her own, tries to complete her work, keen on art and craft. She enjoys her day in school. Very good. Very good. So she is promoted. Thank you so much, ma'am. And all the best. Thank you so much, And all ma'am, the to best for both of you. future. And I just want to clarify one thing. As you were a little apprehensive that we might not promote, it is usually not the school's policy, you know. It is whatever the child is able to grasp. The class curriculum is not the target. The target is they have to learn certain skills at their own pace so that it is there with them. Okay, so good effort. Keep it up. Way forward is make her more independent and relax. So Roshni, can you tell me the numbers again? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,